Hello, future officers. Welcome to Decoded again. Today we are going to solve the assignment number 1 which has been shared on Telegram channel. This video will contain the solution to the assignment number 1 of number system where the number is represented in the form of AB is equal to A into 10 plus B. The assignment was given to you today itself and this video is a solution to the assignment. तो assignment आपको दिया गया था Telegram channel पे, ये वीडियो उसका solution है. तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तो टोटल असाइनमेंट में हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे और 8 आपके पास क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अ 2 डिजिट नंबर x इज इक्वल, एक 2 डिजिट नंबर है x सच दैट x इज इक्वल टू AB, x AB के बराबर है इफ, सो इट्स लाइक we are given x is equal to AB. If a into b factorial is greater than a plus b factorial, then how many values of x exist? फैक्टोरियल का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि अगर आप ऐसे लिखें कि 2 फैक्टोरियल तो ये बनता है 1 इंटू 2. 3 फैक्टोरियल लिखें तो आप ये बनता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4. मतलब जितना फैक्टोरियल लिखा है उतने नंबर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है, ये सब आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, आई होप. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिविंग अस अ कंडीशन. ओके, दिस क्वेश्चन इज गिविंग अस अ कंडीशन दैट कि आपके पास ये कंडीशन है कि a इंटू बी फैक्टोरियल जो होगा इन दोनों डिजिट्स का, ये ग्रेटर होगा a प्लस बी फैक्टोरियल. देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन एग्जिस्ट. मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितनी वैल्यूज होंगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं. 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से लेके आपके 99 तक. तो हमें इस बीच में इन वैल्यूज बताना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल होंगी. ठीक है, तो आप एक चीज़ को देखो कि x इज इक्वल टू ए बी के बराबर है. अगर b कहीं भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, b कहीं भी ज़ीरो हो गया अगर b कहीं भी ज़ीरो हो गया तो मतलब आप ये हो जाएगा कि a इंटू ज़ीरो फैक्टोरियल, तो ये 1 आएगा हमेशा. तो ये कंडीशन कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए. तो हम एक चीज़ में एलिमिनेट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे कि जितने भी नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. दोबारा से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा उसमें आप देखो कि ओके, जितने भी नंबर्स ऐसे फॉर्म होंगे कि आप इसको ऐसे देखिए कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कि फॉर्म वाले होंगे, वो नहीं बन पाएगा. क्योंकि आप देखो इसमें ये सम ना ज़्यादा आएगा. जैसे कि 1 फैक्टोरियल तो 1 है, यहाँ तो इक्वल आ गया, पर यहाँ 0 फैक्टोरियल बनेगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है. ओके, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1. तो अगर आप 20 डालोगे तो यहाँ 1 बनेगा, और ये बनेगा 2 प्लस 0 यानी कि 2 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2. तो इन जितनी भी ये कंडीशंस हैं इसको आप निगलेक्ट कर दो, ये कभी भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब 10 से स्टार्ट करते हैं इसको लेना. सबसे पहले आप 11 को देखें. 11 में 1 इंटू 1 आएगा, 1 प्लस 1 2. तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ से लेके आप 19 तक चले जाओ. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. जैसे कि 1 इंटू 9 आपका बनेगा 9 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल. तो ये ज़्यादा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है 11 से लेके 99 तक. तो अब हम चलते हैं 20 की लाइन में. ठीक है, 20 की लाइन में चेक करते हैं. तो 21 को लो. 21 में होगा 2 इंटू 1 2 एंड 2 प्लस 1 3. तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. तो 22 को चेक करो. 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल और 2 प्लस 2 तो इक्वल हो गया. तो 22 की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अब 23 को देखते हैं ज़रा. 23 को देखोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 3 6 एंड 2 प्लस 3 5. तो ये सेटिस्फाई हो रही है. ऐसे 24 भी सेटिस्फाई हो रहा है. 25, 26, 27, 28 और 29. अब 30 तो नहीं होगा, हमने देख लिया है. अब हम 30 से शुरू करते हैं. तो इसमें भी अगर आप 31 से लोगे
तो 3 इंटू वन क्या बनेगा, 3 इंटू वन इज 3 फैक्टोरियल एंड 3 प्लस वन इज 4 फैक्टोरियल। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो 31 सेटिस्फाई नहीं होगा। 32 आपका हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो ये आगे तक चलता रहेगा आपका 39 तक, 40 नहीं होगा। अब सिमिलरली ऐसी 41 भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 इंटू वन इज़ 4 एंड 4 प्लस वन इज 5, तो ये 41 भी नहीं होगा। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि जिस भी जहाँ भी यूनिट डिजिट में 1 आ जा रहा है या 0 हो जा रहा है, उसमें किसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और बाकी बस 2 को छोड़ के सभी 2 को छोड़ के अगर हम 3 से भी बात करते हैं और 32 से होना ये शुरू हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी शुरू हो गई। 42 को चेक कर लो आप, 42 को देखोगे तो 4 इंटू 2 8 फैक्टोरियल, 4 प्लस 2 6 फैक्टोरियल, तो 42 में 8 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये भी आपकी 49 तक सेटिस्फाई हो जा रही है। अब 52 51 तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कहीं भी यूनिट डिजिट में अगर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है ये B, तो जहाँ भी B में 0 या 1 हो रहा है वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम इन सभी में से ये वाले टर्म्स को हटा देंगे। तो 52 का चेक करते हैं हम जरा, 52 को चेक करो। 52 में आप देखोगे कि 5 इंटू 2 10 है और 5 प्लस 2 7 है, तो ये फिर से ग्रेटर है, तो ये आगे तक मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप एक कंडीशन नोटिस कर सकते हो कि इन वाले सभी को छोड़कर 50 मतलब जैसे 61 भी नहीं होगा, तो यहाँ 62 से होना शुरू हो जा रहा है, यहाँ भी 69 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि आप इन रोज़ को काउंट कर लें अब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रोज़ में सेटिस्फाई हो रहा है। और कितने हो रहे हैं आप देखें, इस वाले को छोड़ दें अभी एक बारी, ठीक है, 2 वाले को, और बाकी ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज़ में सेटिस्फाई हो रहा है ये, ठीक है, 7 रोज़ में सेटिस्फाई हो गया 7। और हम देखेंगे कितने वो पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बने थे यहाँ पे आप देखो 1 2 3 35 36 37 38 39, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 इंटू 8 कर दोगे आप, क्योंकि ये 7 हो गई यहाँ से यहाँ तक और 8 पेयर सेटिस्फाई हो, 32 से लेके 39, 42 से लेके 49, 52 से लेके 59, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आया 56। अब 56 आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे 22 नहीं हो रहा है, पर ये 23 से लेके 29 तक जा रहा है, तो इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ गया 63। सो योर आंसर इज 63। ओके, गेटिंग? So the answer to the question number 1 is 63. अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मतलब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको आंसर में भी बताया है जो आंसर की दी है, तो इसको चेक करते हैं। तो द क्वेश्चन गोज लाइक दैट, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर y, if y is equal to number of numbers that have the factorial of products of their digits less than or equal to factorial of some of the digits, then what is number? ये कह रहा है कि y एक नंबर है, ठीक है, y उन नंबर का नंबर है जिनके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई अगर कोई नंबर था, समझ लीजिए x इज इक्वल टू ए बी, तो उसमें a इंटू बी फैक्टोरियल जो है या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा a प्लस बी फैक्टोरियल के, ठीक है, या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा। तो छोटे वाले में तो हमें पता ही है कि आप अगर देख लोगे कि 10 से लेके 19 तक जो अभी हमने ऊपर देखा था 10 से लेके 19 तक, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a प्लस बी फैक्टोरियल छोटा है ए बी से, जैसे कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में चेक कर लो कि सबसे बड़ा ये होगा 1, तो ये होगा 1 इंटू 9 9 और 9 प्लस 1 10, तो मतलब कि 9 फैक्टोरियल इज लेस देन 10 फैक्टोरियल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तो इनको काउंट कर लो पहले, ये कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 आपके पास यहाँ आ गए केसेस, ये 10 ही आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपके 10 से लेके 19 तक तो यहाँ हो गए केसेस, ठीक है। 10 केसेस ही हो गए। अब आपने देखा कि ऊपर वाले में 20 और 21 सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि ये आ रहा था 20 और 21 को चेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि 0 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज 2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और 21 में भी हो रही है, तो ये दो, तो ये काउंट कर लो। अब ये भी हो गए दो केस ही आ गए आपके पास। सिमिलरली ये जितने भी आपके पास ये 21 से वो फिर 31 से लेके यहाँ तक भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस ये बन गए आपके पास जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद ये भी केसेस हैं 1 2 3, सॉरी, ठीक है, 7 ही हो गए। और फिर ये भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस ही हो गए आपके पास, ठीक है। और ये 10 केसेस हमारे पास पहले से आ गए थे, तो ये होगा आपका 25 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे 15 प्लस 10, तो इसका आंसर आपका 25 आएगा। इसका आंसर 25 इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है, समझ गए। जो ऊपर हमने जितने भी केसेस हमने ऊपर एक्सक्लूड कर दिए थे वो केसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो केसेस जो हैं वो 25 बन रहे, जैसे कि 10 से लेके 19 तक होगा पहले तो वो सेटिस्फाई, ठीक है। ठीक है, पहले तो 10 से लेके आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वहाँ तक 19 तक, ठीक है। 10 से लेके 19 तक सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली कंडीशन, तो 10 केसेस ये आ गए। फिर आप ये देखें कि यहाँ 21 और 22 दो केसेस ये आ गए आपके पास, ठीक है। सॉरी, अभी भी इसका ज़्यादा आएगा, 27 आएगा, ये 2 हमने ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है। 2 केसेस ये हो गए 21 और 22 के। उसके बाद आप देखें कि ये जो 31 से लेके 91 तक ये भी आएंगे आपके पास, 31 40 1 2 3 4 5 6 7 केसेस ये आ गए। फिर ये वाले भी होंगे आपके पास, तो 20 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस ये आ गए आपके पास। तो आप ऐड कर लीजिए, ये 15 आ गया, 10 आ गया और 2 केसेस ये आ गए, तो आपका आंसर आएगा 27। ओके, 25 भी नहीं 27 इसका आंसर है आपके पास, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज दैट देयर इज अ 2-digit नंबर, लेट्स से x एंड इट्स नोन टू राम। राम को एक 2-digit नंबर है x जो राम को पता है। राम ऐड करता है, राम क्या करता है, ऐड कर देता है। राम adds x in a number found by reversing the digits of x and the product of the digits of x he get 117। ये ऐसे कह रहा है कि राम के पास एक नंबर है x, समझ लीजिए AB था वो, तो राम ऐड कर देता है AB को और उसके जो रिवर्स हुए डिजिट्स उसको प्लस A इंटू B को, तो उसके पास बनता है 117, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जो हमें सीखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म, 10 इंटू A प्लस B प्लस 10 इंटू B। ये हमने जो वीडियोस पहले अपलोड हुई हैं नंबर सिस्टम की, उसके अंदर ये हमने देखा हुआ है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को एक्सपैंड करके, प्लस A इंटू B इज इक्वल टू 117 दिया है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इसको 11A प्लस 11B, ओके। इसको ऐड करोगे आपका 11B, इसका 11A प्लस AB इज इक्वल टू 117। तो मैं 11 कॉमन लेता हूँ, A प्लस B इज इक्वल टू 117। हम वो पुरानी वीडियो जो नंबर सिस्टम की थी उसमें हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस दैट कि इन सम क्वेश्चंस वी नीड टू रेफर द ऑप्शंस, ओके। ऑप्शन में से जो वैल्यूज़ हमें दी हैं उसको पुट करके हम चेक कर लेते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो आप A को
3 मान लें और b को 6 मान लें, तो 11 और प्लस ए बी भी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका है a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 117, ठीक है। आप कंडीशन सेटिस्फाई करके देखिए। 11, अब 3, a को 3 मान लिया, b को 6 मान लिया, तो ये आपके आ जाएगा 9 प्लस a इंटू बी, यानी कि 6 इंटू 3। चेक कर लेते हैं, ये आएगा आपका 99 प्लस 18, जो आपका बन जाएगा 117। तो ये ऑप्शन ए सेटिस्फाई होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आप डायरेक्टली ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, वरना अगर आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और एग्जामिनेशन में ये ठीक नहीं रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जितना छोटा करके सॉल्व कर सकें, उतना करने की कोशिश करेंगे इसे, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी, you need to know one thing, that UPSC is continuously asking the question of the type where you have to sometimes see from the option also, or you have to compare, or you have to hit and try to solve the question. देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, a 2-digit number x is divided by a number obtained by reversing its digits. The result we get is questioned as 4 and remainder as 15. Sorry, this is printed as 1, it is 15, it is not it is 15, it is not 1. Further, if we subtract 9 from x, we get a sum of square of digits of x, then what is the value of x? Okay, this is 15, this is not 1. Okay, this is a mistake, this was 15. Okay, so question goes like कि एक 2-digit number x है जिसकी वैल्यू x is equal to ab, और we are given that when ab is divided by ba, then quotient is 4 and remainder is 15. So we know one thing, that dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. All of us know that. Okay, so here dividend is your number ab, that is 10a plus b. Divisor is your ba, 10b plus a, and your quotient is 4 here, and your remainder is 15. Now let's see this equation. So it goes like that, 10a plus b would be equal to 40 times b plus 4a plus 15. Okay, getting? You can write it down it as 10a minus 4a plus b minus plus b minus 40b is equal to 15, isn't it? I can write it down as 6a minus 39 times of b is equal to 15. We cancel this out, we get we can cancel it out at 2, 13 and 5. So it becomes 2a minus 13b is equal to 5. Okay, isn't it? Another equation, what we are given is कि if we subtract 9 from x, we get sum of the squares of digit of x. So if x is ab and we subtract 9 from it, we get sum of the digits, square of the digits. So a square plus b square, these are digits of ab, of the number. Okay, this is given. So now to directly find this, we have to put the values, and it would become a very lengthy question. So what we can do here is, we can try and put the values which are given in the option and check if it satisfies. Okay, let's see for this one. It's 2a minus 13 times of b is equal to 15. Now let's put the value. Let's take the option number 1, 91. So here 91 is given, this is ab, so a is 9 and b is 1. Okay, so let's put it. So 2 into 9 minus 13 into 1, so this gives rise to 18 minus 13. Oh sorry, this is 5, this is not 15, this is 5. Okay, we get 5. So this equation is satisfied, so we can say our answer is 1.
So in many questions, in also in UPSC, if you get some equation, you can try and put it from the option. You would be getting the answer very soon. You need not keep on solving the question, because sometimes it is very difficult to solve the question in uh, such a lengthy manner. Because if you want to really solve it, then what you have to do is that you have got two equations. One is this and this. Then you have to solve both of these equations. Then you will get the value of a and b, and then you will get the answer. But it would be a very long process. Okay, we'll not go for that process. Now we'll go to the next question. There's a two-digit number x and y such that y is a number obtained by reversing the digit of x. I would like to tell you one thing, that why I have taken this question in assignment is that so that you get to know that in some questions we can form equation and try to put the values from the option to get the answer. Okay, so the question goes like, there are two two-digit number x and y such that y is a number obtained by reversing the digit of x. Okay, so let x is equal to ab, then y would be ba, we know that. Okay, further product of these two numbers yields 2430. It says x into y is equal to 2430 given. Okay, so it means it is saying that 10a plus b, okay, into 10b plus a is equal to 2430. Now you see one thing. Okay, you see one thing, that the question further says then the value lowest among these two numbers is, इन दोनों numbers जो x and y इसमें lowest कौन सी होगी. तो lowest value इसमें दो ही हैं. देखो options को भी देखें आप, try to see options also. You can sometimes directly arrive at the answer even without solving the question. So it is telling us to find the lowest among these two numbers, okay, x and y. So lowest would be this or this. Okay, the lowest would be this or this only. Otherwise no other would be possible, because these two would be larger numbers. Okay, so the lowest would be these two, because the reverse of this is this and reverse of this is this. So one of this must be the answer. So now what we'll do is, since we have this, we'll try to solve this equation. So it would be like 100 times of ab plus 10a square plus 10b square plus ab is equal to 2430. So what I get next is 10 I can take common, a square plus b square, okay, plus 101 times ab is equal to 2430. Now let's try and put the value of a and b here and check if it satisfies this, and this answer comes. So let's check for option number 1. This 45 I am taking as ab, so 4 is a and b is this, so I'll put the value of a and b here. So your a square becomes 4 square is 16. Okay, a square becomes, your a square, that becomes 16, and your b square is 25 plus 101 times into 4 into 5. Okay, let's check what comes. So this would be 16 plus 25. Okay, so this is your 10 into 6 and 5 11, and then 2 3 and 1 4 41. 6 plus 5 is 11, 3 and carry 1 41 plus 20 into 101, 20 into 101. Okay, 41 into 10 is 410 plus this is 2020. Now I add it to it, so I get 0 3 4 2. So this is satisfied. So on putting a is equal to 4 and b is equal to 5, my equation is satisfied. So I can say my answer is this. So what I wanted to tell you is that sometimes you can easily solve the question even without solving the complete equation. Okay, so you must pay attention to such type of illustrations. Now we are given another question. Okay, that if
x square plus y square plus z square is equal to 74, and x, y, z is a 3-digit number. Further, if the digits at 100 place is 2 times the sum of digits at tens at 100 place, and find the 3-digit number x, y, z such that x, y, z minus y, x, z is equal to 495. Okay. So I am given the condition that कि एक्स वाई जेड एक 3-digit नंबर है मेरे पास, ठीक है. फर्दर मुझे दिया है कि द डिजिट एट द 100 प्लेस जो कि है एक्स, 100 प्लेस पे एक्स है, 10th प्लेस पे वाई है और 1st प्लेस पे जेड है. तो आई एम गिवन दैट 100 प्लेस, द डिजिट एट 100 प्लेस इज इक्वल टू 2 times the sum of digit at 10th place, that is y and z, 2 times y plus z. So my one equation is this, that x is equal to 2 times y plus z. My one equation is this. Okay. Other equation what I have given is that x square plus y square plus z square is equal to 24, isn't it? So, and another thing which I have given is that x y z minus z y x is equal to 495. So I can write this in expanded form, and it becomes this, that I write in expanded form 100x plus 10y plus z minus 100z minus 10y minus your x is equal to 495. Now this becomes your 99 times, this get cancelled out, 99 times x minus 99 times z is equal to 495. I simplify it, and I simplify it, and I get 5 over here, and x minus z is equal to 5. Okay. And another equation I have is 2 times of y plus z. Now let's check from here that if any of it satisfied. Let's take the option number 1. So according to option number 1, let's say I take option number 1, 813, it equals to x, y, z. So here x would be 8, y would be 1, and 3 would be your z. So I put it in this equation number 1. So equation is like x minus z is equal to 5. So your x is 8 and your z is 3. So it comes out to be 5. So equation 1 is satisfied. Now let's check for equation number 2. X is equal to 2 into y is your 1 and z is 3. So 1 plus 3 is equal to your 2 into 4 is equal to 8, and x I already have as 8. So 8 is equal to 8. So this equation number 2 is also satisfied. So I can say that option number 1, A, 813 satisfy this equation. Okay. Now we move on to next question. Okay. The next question goes like that. There is a 3-digit number. Okay. X is equal to PQR is a 3-digit number where the sum of the digit is 1/7 times the product of the digit. So I can say that P plus Q plus R is equal to 1 P into Q into R divided by 7. I'm given that. So what I can do is I can write it down as that 7 is equal to P into Q into R upon में आपका P plus Q plus R. Okay, I'm given that, and I have to find the number of possible value of this triplet P, Q, R so that these conditions get satisfied. Okay, so the product of the digits, this P, Q and R are digits of this number. The product of the digits and the sum of the digits should give me a number 7. The product of the digit है और जो sum of the digit है वो मेरे को 7 नंबर देना चाहिए. So इसका मतलब इन में से कोई एक आपका 7 होगा, तभी मेरे पास यहाँ 7 आएगा. इसको सम करने के, इसको डिवाइड करने पर कोई एक 7 होना चाहिए. तो मान लेते हैं R 7 है, तो मैं कर सकता हूँ कि 7 इंटू P इंटू Q अपॉन P प्लस Q प्लस 7. ओके, एंड is equal to 7. So this 7 and 7 gets cancelled out. So I am left with that कि, so what I am left is that कि आपका PQ is equal to P plus Q plus 7. Okay.
Now let's simplify it. So what we can do is we can shift it here to PQ minus P minus Q is equal to 7. I can write it down as P plus PQ minus P minus Q is equal to it becomes your 8 minus 1. I can write 7 as 8 minus 1, so it becomes PQ minus P minus Q plus 1 is equal to your 8. This one I bring it here, so the sign changes and becomes plus. I can further write it down as that you can take this P common from here, so you can write it down as Q minus 1, sorry, Q minus 1, yes, and here minus 1 is taken common, is Q minus 1 is equal to 8. Okay, so we can say that P minus 1 into Q minus 1 is equal to 8. This can be simplified as this. If you multiply this again, okay, if you multiply this again, अगर आप इसको दोबारा multiply करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पता है? आपके पास यही आ जाएगा पी क्यू, देखिए P इंटू क्यू पी क्यू, देन आपका P इंटू माइनस 1 इज माइनस P, देन माइनस Q एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सेम इक्वेशन आ गई. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है. सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन से इज दैट P minus 1 comma Q minus 1 is equal to 8. This means that multiplying these two should yield me 8. So the only factors of 8 are, you can say the only factors of 8 are 4 into 2 or 8 into 1. If the only two factors which would yield 8 are 4 into 2 and 8 into 1. Okay, so I can say either this is 4 or this is 2, or this is 8 or this is 1. Okay, so if this is 2, this is 4, this is 8, this is 1, then it is one and the same thing. So now what we do is like if this is 4, so if P, this is 4, so if P minus 1 is equal to 4, then P comes out to be your 5, and similarly if Q minus 1 is equal to 2, then your Q comes out to be 3. Similarly if P minus 1 is equal to 8, then your P is equal to 9, and if Q minus 1 is equal to 1, then your Q is 2. So this is 5, yeah, this is 3. So I can say that I have P is equal to 5 comma 3, P comma Q, so I can say that the values of P I have are 5 comma 9, and the values of Q I have are 3 comma 2, and value of R we have already taken as 7. So two triplets are possible. For P Q R, one triplet is like your 5 3 7, and your other triplet is 9 3 9 2 7. So two possible triplets are there. Okay, so your answer would be 2 here in question number 7. Now we'll go to question number 8. Okay, it says that the question number 8, your question number 8 is this one. This says to you that there is a 4-digit number X PQRS, such that I've given a 4-digit number X is equal to PQRS. Okay, and I'm given this such that the sum of digits at 100 place, its 100 place is Q, and 10th place is R, and its 1000 place is X. P. Okay, X is the number. So it says that the sum of the digit at 110th place. Okay, sum of digit at 110th place, yani ki 100 place is Q and 10th place is R, is equal to 2 times the digits at 1000 place. Digit at 1000 place is P. Okay, so Q plus R is equal to 2P. Let's make it as equation 1. Further it says that this one, that R plus
6s is equal to 2 times p plus q. Let's make it as equation number 2. Okay. So this is your equation number 2. And further it is saying that p plus 5s is equal to 2r. This is your equation number 3. Then what is the sum of all 4 digits numbers satisfying this condition? Whatever the 4 digits number can be made using this p, q, r, s and these condition, उसका हमें सम ढूंढना है. जो भी नंबर इसमें आएगा उसको हमें सम ढूंढना है. ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से वी हैव दैट q plus r is equal to 2p, and from equation number 2 we have r plus 6s is equal to 2p plus 2q. Okay. So we subtract these equations. So we subtract both of these equations. So what we get here is that from here r and r get cancelled out, p and p cancel out. So we have q minus, okay, we have q minus wait, let's just, so that it does not become cumbersome, let's do it like this. So we have that q minus 6s is equal to minus of q. Okay, so I can see that 6s is equal to minus 3q, minus and minus get plus, and I have that q is equal to your 3 times of, 2 times of q is, because 3 ones are 3 and wait, this is your 3 and this is 2, so this is 2s. So I can say that my q is equal to, my q is 2s. Okay, so I get q is equal to 2s. Now I put this back in equation number 1. Okay, put in equation 1. So equation 1 I was like q plus r is equal to 2p. I was given that q plus r equal to 2p. Now put the value of q over here, so I get 2s plus r is equal to 2 times of p. Okay, let's delete this because it's not needed anymore. We have already solved this question, so let's delete it completely and let's use this space for solving this question, because this requires a lot of equation to be solved. Okay, so by putting this I get 2s plus r is equal to 2p, so I marked it as equation number 4. Okay, now through equation number 3 I have p plus 5s is equal to 2 times of r. Okay, now now what we do is we try to solve this equation, which is equation 4 and 3. We'll use both of these equations now. Okay, so what I do is that let's simplify it, that 2p minus r is equal to 2s, and this is your p minus 2r, or sorry, this is your, wait, yeah, your 2r minus p is equal to 5 times of s. Okay, okay, so now we need to balance this equation. Let's multiply this equation by 2 and let's subtract it, or let's add it after multiplying by 2. So if I multiply it by 2, it becomes 4p, it becomes 2r. So this 2r and 2r gets cancelled, so we are left with like 4p minus p.
हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया यहाँ पे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 इंटू 2 4 बन गया 4p, ये 2r से 2r कट गया, सो यहाँ वाला p आ गया 4p माइनस p इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू 2 4s प्लस 5s. ओके, सो आई हैव 3p इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ s. ठीक है, so what I have is that q is equal to your 2s and your p is equal to your 3s. Okay, so now we'll put this in equation number 4, this value. ठीक है, so what we get is that 2s plus r is equal to, we put the value of p, we get 6s in equation number 4, so we get that r is equal to 4s. So from here we can say one thing, that p is equal to 2 3s, q is equal to 2s and r is equal to 4s. So I can say that if x is equal to p q r s, so I can write it down as, let's put this as 3 because s gets cancelled out, q becomes 2, r becomes 4 and s is s, so 1. So any number of the form 3 2 4 1 would satisfy that. So one number is this 3 2 4 1. So other number would be, can be 2 times of this. If we make a number that is 3 times of this, would not be possible. Okay, because it would become a number which is not satisfying this equation. So only other number which is satisfying this would be 2 times of this number. Okay, 2 times. So only 2 numbers are satisfying. One is this and one is 2 times of 3 2 4 1. That number is 6482. So we wanted to find the sum. So what we'll do is, write it down, it's here, 3 2 4 1 plus 6482. So it becomes 3 12 2 6 7 and 9. So the only option which is giving this is 9723. Okay, now this is done. So we are now on question number 9, which is the passage question. So you need to read these two following passages and answer the question. So the passage goes like, technology-based measures in terms of weapon platform system can always be confronted with technology-based countermeasures. Okay, the ongoing Russia-Ukraine conflict or maybe setbacks by Israel Defense Forces in Israel-Hamas conflict have elucidated the point that the human element and conventional methods of combat shall outlive modern technology, which can only complement the age-old methods and tactics. Okay. So this paragraph says that कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर को हम हमेशा कन्फ्रंट कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी बेस्ड काउंटर मेजर्स. The ongoing Russia-Ukraine conflict or maybe setbacks by Israel Defense Forces in the Israel-Hamas conflict have instituted at the point that the human element and conventional method of combat shall outlive modern technology, which can only complement the age-old methods and tactics. What it's trying to say is that human element and conventional methods can always outlive modern technology. So the modern technology can only complement the human tactics. It cannot defeat it completely. So let's read the options and the question which is given for about this paragraph. Which one of the following statements best reflect what is implied by the passage? What this passage is trying to say? Modern weapon systems are inferior to traditional art of fighting war. It is not saying that. It is not saying that modern weapons are inferior. So we
struck it down. Hamas is superior to Israel Defense Forces. In the passage, it is no way saying that. Modern weapon systems can never outperform conventional way of fighting. It is also not saying that. It is saying that modern weapon systems can complement, but it cannot outperform or anything like that. It is not saying this also get cancelled out. So it says that modern technology can complement human beings, but cannot alone outperform human mind in warfare. Yes, because it is clearly saying that modern technology can only complement age-old method tactics. Okay, so our answer would be D. Now we'll go to another passage. Few things on social media go as viral as short clips of statements by public figures, often taken out of context. In platform designed to capitalize on our shrinking attention spans, users rarely have the time to or the patience for context. Even if some may wish to trace a circulating video clip to its original, longer video source, it would have already gone viral by then, promoting journalists to play catch up, although we may not report on it. Okay, so we'll read it again. Few things on social media go as viral as short clips of statement by public figure. It is saying that very few things on social media go that viral as the short clips of public figures, often taken out of context. Matlab, these shorts are often taken out of context. In platform designed to capitalize on our shrinking attention spans, users rarely have the time or the patience for context. In that, this saying that users just see it in the first instant, they do not even have the time and patience to find the context, that in what context this short clip has been said. Even if some may wish to trace circulating video clips to it in a longer video source, it would have already gone viral. So it is saying that by the time anyone would try to go to the context that from where this video short clips have been taken, by that time it would have already gone viral, promoting journalists to play catch up, although we may not report on it. Okay, which is the following statement best reflect the crux of the passage? Social media is the best way to circulate short clips. It is not saying anything like that. Social media is a source of misinformation campaign. It is not saying that. Social media is a source of misinformation campaign. It is not nowhere saying that completely. It is just saying that the social media things are taken out of context and they become they spread very fast. Social media users are impatient. It is not trying to say that. It is just saying that users do not have that much time. It is not saying that they are impatient. Social media context should be digested with care and it may be manipulated diverging from the original context. Yes, this is right. Because above it is saying that we may digest the content even without knowing its context and it might be manipulating us. So this statement here is correct. So okay guys, we are here done with this 10 questions which were given for the assignment. Tomorrow there would be a assignment test of odd and even and prime and composite number, and its video solution would be available tomorrow only. That would be available on the Telegram channel. The assignment test would be available on the Telegram channel, so kindly join the Telegram channel from the bio of this channel. These coded. Okay, thank you, have a nice day. Keep practicing. All of you will definitely clear the CSAT if you'll keep on practicing every day. Okay, our plan is to complete whole of the CSAT in a span of 1 month. Okay, with practice questions and clearing of the concept. If you do this process, that you watch the video first, then attempt this test and watch the video solution video, then you are definitely going to clear it because you'll be practicing it so much time. Okay, thanks for watching it. Thank you so much. Have a nice day.